भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी इत्यादि देशों में बहुमत में हैं। इस धर्म के मूल में 4 वेद हैं। वेदों के सार को ही उपनिषद कहते हैं। इसे ही वेदांत कहा गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्म को ही सत्य माना गया है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी जगत से अलग है। सभी आत्माएं उस ब्रह्म का अंश ही हैं। हिंदू धर्म की सैकड़ों बातें जिसे दुनिया पसंद करती है, जैसे कि ईश्वर एक, नाम अनेक, ब्रह्म या परम तत्व सर्वव्यापी है, ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करें। हिंदुत्व का लक्ष्य है स्वर्ग नरक से ऊपर। हिंदुओं में कोई एक पैगंबर नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर बार बार पैदा होते हैं। परोपकार पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप है। जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। स्त्री आदरणीय है। सती का अर्थ पति के प्रति सत्यनिष्ठा है। पर्यावरण की रक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। हिंदू दृष्टि समतावादी एवं समन्वयवादी है। आत्मा को अजर अमर माना गया है। हिंदुओं के पर्व और त्योहार खुशियों से जुड़े हैं। हिंदुत्व का लक्ष्य पुरुषार्थ है और मध्य मार्ग को सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार से बहुत सारे बातें हैं जिसको हिंदू धर्म का एक जीवन शैली माना गया है। इस प्रकार से हिंदू धर्म, जिसे उन्नत जीवन जीने की शैली भी कहा गया है, इसी सरलता के कारण आज विश्व में हिंदू धर्म की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य देशों के लोग आज हमारी परंपराओं से आकर्षित होकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। We distribute not Indian culture, we distribute Vaishnava culture, Vedic culture, because nowadays modern India is also changed. Now India more and more look on the Western countries and they follow this Western culture, but we don't follow Western culture. We follow Vedic culture. I think in Europe people are less spiritual, or maybe not, but at least here in India it's a very spiritual country, so I think they want to feel it and try to be part of it or something like that. I'm not sure, know for sure. So well, for me it was like amazing to see all those people who are so spiritual and so religious and all come together and doing this and having this bath, and it's like, well, it's hard to understand for a European person. आजकल वो इंटरनेट और टेलीविज़न के द्वारा ये भर्ती की सीमें जो हैं अभी धर्म के लिए है नहीं, पूरी दुनिया एक ही है। और सनातन धर्म जो सबसे मूल धर्म है, और उनसे जोड़ना विश्व के लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत उत्तम है। और इसकी सनातन धर्म की प्रचार होने से विश्व शांति ज़्यादा फैलेंगी और सभी के लिए फ़ायदा होगा। चलिए बात करते हैं आज के मेहमान केशव फुलब्रुक से। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज कुछ हमारे साथ एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को लेकर आया हूँ जो शायद आप सबके लिए भी एक जिज्ञासा का विषय होगा। देखिए, भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म के बारे में हमारी एक मान्यता है या हमारी एक ठोस हम लोग इस पे विश्वास करते हैं। तो हमारा मानना है कि शायद हमारे संस्कार, हमारी सोच कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से भी कनेक्टेड होती है।
तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच में ब्रेडन फुलब्रुक है अमेरिका से, जिनका भारतीय नाम केशव भी है। केशव भगवान कृष्ण को कहा जाता है हमारे भारत में। तो केशव फुलब्रुक हमारे साथ हैं और मेरी इनसे मुलाकात आज से कुछ साल पहले जब हुई तो मैं इतना हैरान हुआ, इम्प्रेस हुआ। बहुत जल्दी इन्होंने मुझे दोस्त बना लिया, अपनी यात्रा के बारे में बताया, जो इन्होंने ऋषिकेश में कुछ सीखा, कुछ संस्कृत के मंत्र भी सीखे, कुछ हवन भी सीखा। मतलब भारतीय पद्धतियों, भारतीय धर्म, भारतीय जीवन शैली, इन सब में इनका बहुत रुझान उस समय मैंने देखा। उस आंखों में वो एक प्रेम, वो जिज्ञासा, वो सब चीजें मैंने देखी। तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी ब्रेडन फुलब्रुक उर्फ केशव फुलब्रुक को अपने साथ इस मंच पर लाऊं और जानूं कि उनके मन में क्या है, वो कैसे प्रभावित हुए भारत या भारतीय जीवन शैली से, क्या उनका बचपन है, क्या उनका जीवन है, क्या उनका भविष्य है, क्या सोचते हैं सबके बारे में। तो बिना देरी करे, बिना समय खराब करे, मैं आप सबका परिचय कराता हूँ ब्रेडन फुलब्रुक से। नमस्कार फुलब्रुक, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, धन्यवाद फॉर द इनविटेशन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। वही हंसी, वही मुस्कुराहट, वही आंखों में जिज्ञासा जो मैंने पहली बार देखी थी। तो फुलब्रुक जी हमारे साथ हैं। बिना किसी वापस से देरी करे मैं चाहूँगा कि जैसी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो इनको सरल लगे उस भाषा में कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं। कैसे ये टर्न हुए भारतीय जीवन शैली पे, या इस तरह की चीजों में इनको इतना रस या इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो ब्रेडन, आप अपने बारे में कुछ बताओ, अपना पास्ट और थोड़ा प्रेजेंट के बारे में, किस प्रकार से आप भारतीय लोगों से जुड़े या इसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ा? तो जब मैं तो मेरा जन्म लास वेगास में हुआ था और प्रीवियसली तो मैं एक ईसाई परिवार में मेरा जन्म हुआ। फिर तो अलग अलग परिवारों के सदस्य, it's like members of my family I was raised. So जब मैं 13 साल का था एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे लग रहा था कि धर्म जिसमें मैं पैदा हुआ था, there were some questions that were being unanswered. So I began searching. फिर बहुत पुस्तक पढ़ने लगे, and I came across very prabhavit ideas that I had begun to notice कि शायद मैं English में बोलूँगा। I began to notice कि the ideas that were सबसे prabhavit, they credited Hindu authors. They credited things like Bhagavad Gita. They credited things like Yoga Sutras. हमारे शास्त्र जो हैं, they had credited. So उसी समय I began to realize कि there was definitely something there, and it was something that I needed to pursue. तो कि मैं 20 साल का था, somewhere between 20 and 23, I had decided to undergo a formal namakarana samskar, and उसके बाद तो उसी समय मुझे I had gotten the name Kesha. And after that, the rest is basically history. I came to Jaipur 2018 में, 2018 से 2019 तक, and received mantra diksha as well, upanayan samskar as well, and it's just something that it turned into a lifelong search for me, and it's something that I
hope to continue. ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़कर मंत्र दीक्षा ली। बहुत सारे भारतीय इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि सब ब्रेड बटर की दौड़ भाग में कहीं ना कहीं जो बेसिक हमारी आत्मा की नीड है, हम उसे पीछे छोड़ देते हैं। और ऐसे में अगर केशव को केशव नाम उसके गुरु देते हैं और एक दीक्षा प्राप्त होती है, तो इससे बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती। केशव, आपने परमहंस योगानंद का नाम सुना है? जी हाँ, जी, परमहंस योगानंद जी और ने इनका ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, परमहंस योगानंद जी का जीवन अमेरिका में बीता। भारतीय संत थे। उन्होंने बाइबल और भारत के जो ग्रंथ हैं उन दोनों को कनेक्ट किया है, एक ब्रिज बनाया, और बाइबल के जो वर्सेस हैं उसको गीता के वर्सेस से कनेक्ट किया उन्होंने। और जो परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है कैवल्य दर्शन। उसमें भी वेस्टर्न जगत का जो साहित्य है, बाइबल है और भारतीय ग्रंथ है, उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया। तो शायद सबके मूल में तो वही मंत्र है, वो प्रेम है, वही जीसस का है और वही भारतीय मूल मंत्र है मेरे ख्याल से। पर आपका इतना स्ट्रांगली भारत के साथ कनेक्शन और इस लेवल पे जहां आपने गुरु दीक्षा ली, ये सचमुच रोमांचकारी और बहुत ही अद्भुत है। दूसरा, आप इस मतलब जैसा आपने कहा कि मैंने दीक्षा ली, इसमें आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? अभी क्या कर रहे हैं इस वक्त जीवन में और आगे क्या करना चाहते हैं? What are you doing now? तो What will be? Yes. तो अब मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है। थोड़ा देर से शुरू किया मेरी पढ़ाई कॉलेज में, तो पॉलिटिकल साइंस में होगा मेरा BA। फिर इसके बाद मुझे लग रहा है कि भारत में वापस आऊँगा सितंबर में। Now, of course, coronavirus का सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हो सकता है। तो इस बार दिस विल बी फॉर तमिल भाषा सीखने के लिए, जैसे मैं जयपुर में था हिंदी सीखने के लिए। तो आफ्टर दैट मुझे आशा है कि so there's a program in Coimbatore for to learn to kind of go deeper into Paurohityam and things like that. Mujhe aasha hai ki I would be able to join that program, or dekhenge. But iske alawa to I have a career plan, that's related to political science. At the same time, I would like to find a way to join my career with my dharmic interests. And we'll see how that ends up looking. Most people will, pursue both at the same time, and there may not be a direct connection, but, we'll see what the future holds there. Mere liye, the thing that inspires me is that what Sanatan Dharma has given me in terms of the depth, helping me to reach depths in my sadhana and shape my perspective and things of this nature. I want to try and give back, give the same gifts that I feel that I've been given, to other people perhaps who are in a similar position to myself. So ab mein kind of the Arshavidya parampara, so the diaspora of teachers who were connected with the Brahmalin Swami Dayananda Saraswati ji, they're primarily the institute that I follow through the Vedanta lineage that I study with. And my current Guruji, so
from whom I took Diksha is in Jaipur itself. He's in Jaipur. Okay. Swami Brahma Parananda Saraswati ji. But so I'd hope to give back in some way to that organization later. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कुछ और प्रश्न करना चाह रहा था। मेरे को ध्यान है क्योंकि मेरे सेंटर पे बहुत विदेशी आते हैं, तो कुछ साल पहले एक फिनलैंड से एक व्यक्ति आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको भारत में क्या अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने साउथ से लेके नॉर्थ तक ट्रेन में सफ़र किया, और ट्रेन में भी नॉर्मल डब्बे में जहाँ भीड़ होती है, नॉट रिजर्व्ड। तो उन्होंने कहा कि वहाँ सब लोग, बड़ी हैरानी की बात थी कि सब अननोन है और सब बातें ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत पहले से जानते हैं। तो उनको भारत के कल्चर में उन्होंने कहा कि शायद फिनलैंड में होता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतना क्लोजली बात नहीं करता, अनजान व्यक्ति से, अननोन व्यक्ति से। पर उन्हें भारत में ये खूबी दिखी कि एक भीड़ है, अनजान है, और सब ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे परिवार के सदस्य हैं। आपने भारत में क्या देखा, क्या अच्छा लगा आपको भारत या भारतीय लोगों में? तो ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे, and I feel the exact same way कि तो अमेरिका में सब I don't know, like strangers जैसे मानते हैं। even हालांकि तो मैं मिज़ूला मोंटाना में रह रहा हूँ अभी, और मोंटाना it's ज़्यादा friendly है लोग, they don't seem as far apart as they do like बड़ी शहरों में। पर फिर भी I still tend to notice this. Things, are a little bit more like akelapan. There's a little bit more loneliness. People are a little bit more distant from each other, even still, versus जब मैं भारत में हूँ और जब मैं भारतीय लोगों के साथ हूँ अमेरिका में, and there's an instant assumed connection that you can have, that is it's comfortable. There's no kind of anxiety over closeness, and it's very nice. बहुत refreshing है। हर बार जब अगर मैं भारत में हूँ, यदि मैं अमेरिका में हूँ भारतीय परिवारों के साथ, you always feel like a sadasya of the parivar, no matter where you are. And the hospitality that I've been shown is lajawab. It's like nothing else that I've experienced. So very eager to come back as soon as I can. बहुत बढ़िया। मैंने आपका एक फोटोग्राफ या वीडियो, मुझे याद नहीं, कहीं देखा था, शायद फेसबुक पे देखा या कहीं देखा था, जहां आप किसी के घर पर गणेश जी का हवन करा रहे थे, गणेश पूजा करा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। कुछ थोड़ा सा जो भी आप जानते हैं, हम सब के लिए भारतीय, मतलब जो भी ज्ञान आपने लिया उसका थोड़ा बहुत कुछ सार, बहुत कुछ हमें बताएं। पूजा की आवश्यकता क्या है, उस पूजा से लाभ क्या है, या पूजा करने से उस घर में क्या लाभ मिला होगा, जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें। बिल्कुल। तो one of the ways that I first got, akarshit to Sanatan Dharma is so सबसे पहले Gita padna. The very second thing, the very next thing, I was invited to a puja for Ganesh Chaturthi from a very good friend of mine who had taken me there. And there's something about the process of puja itself that, because you're taking an external action and your focus is getting more and more refined as you go through the process. It in and of itself becomes a meditation, dhyan jaisa. And there's something about it that it was very impactful to me, and I didn't quite understand it at the time. I didn't understand the full impact of it at the time.
तो when I first began studying, I had actually started with Shodashopachara Puja. And I was studying through Kauai's Hindu monastery Johei. It's based in Kauai. They have everyone start with Shodashopachara first. And so I'd go through the process, took on a long sadhana of, it was about a year of, daily Shodashopachara, learning the steps properly. And after that, मैं Las Vegas गया, मेरे पिताजी से मिलने के लिए. तो मेरे पिताजी एक psychologist है, right? Or he had shown me his office at that point in time, where एक program है जिनका नाम brain paint है. Okay. So what it is they hook you up to a machine that measures your brain activity, and then they ask you to go into a state of meditation. तो इसके बाद तो मैं ध्यान कर रहा था and करने लगा. Sorry, बहुत समय से जब से मैंने हिंदी में बात किया, like 2 साल हो गया. And so suddenly he said that there was some very, very unusual activity. He saw that the brain just lit up, and it was indicative of going through like an extremely, extremely emotional experience. And so unhone mujhse pucha after, was there any image that came up that was particularly emotional or particularly prabhavit for you? So during that time when I was meditating, there was, so I'd been doing Ganapati sadhana all the way up until that point. And just so an image of Ganapati came to mind. And, I could feel sort of the, like a powerful emotion associated with that. But it didn't occur to me, it didn't feel, basically, the changes that happen during the course of sadhana, psychologically and whatnot, are, it creates an impression so deep that there's things that begin changing that we may not even realize. It has deep effects that can be life-changing and alters not only one's psychology, it alters many things. And there's something about the whole process that the level of symbolism and meaning that's conveyed through the whole process has always been beautiful and impactful to me, and so it's something that I've wanted to pursue for a long time. बहुत अच्छी आपने बात बताई. जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं ध्यान की, उसका साइंटिफिक प्रूफ है ये जो आप बता रही हैं. तो ये तो कहीं ना कहीं सबको लर्न करना होगा कि हम जो भी ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उसका जो ब्रेन मैपिंग के थ्रू या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम उसको विजुलाइज कर सकें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रूफ है इस सब चीज़ों का, हमारे लाइफ में पड़ने वाले प्रभावों का. ये आपने कुछ नया बताया हमें. और जैसा मुझे याद है कि महर्षि महेश योगी जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए, तो उन्होंने गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है उसके साथ वेव्स का जो मीटर था उसको लगा दिया. तो इस तरीके से उन्होंने भी जो इंडियन जितनी भी अध्यात्म की प्राविधियां थी, मीन सिस्टम थे, उनको कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट से जोड़कर उसको लोगों को सिद्ध किया या प्रूफ किया कि ये वर्किंग में है. उन्होंने वास्तु के फार्मूलाज को भी कहीं ना कहीं एनर्जीज को, बायो एनर्जी पकड़ने वाली मशीनों से कनेक्ट किया और लोगों को शो किया कि देखिए अगर हम ये करेक्शन कर रहे हैं एज पर इंडियन लॉ जमीन पे, तो उसका असर कितना ज़्यादा आ रहा है, ईएमएफ वैल्यू कितनी कम हो रही है, इस तरीके से. तो ये तो आपने बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल दिया अपना. जैसे आपने अभी बताया कि आपके फादर साइकेट्रिस्ट हैं,
तो बाकी फैमिली के बारे में बताओ, आपके कोई भाई बहन है, क्या है, पूरा अपना थोड़ा सा बताएं। जी तो large family, a little bit complicated. So मेरे एक पिताजी है, and मेरी माताजी is so she also is Brahmaline, so she is no longer, but she I'm trying to think here. There's many. So I had 3 aunts and several uncles on my mother's side, and my father's side a little bit disconnected. But it's a big family, but we're spread all over the place. So all over the U.S. And ab mein Missoula, Montana mein reh raha hu, meri mausi ke saath, and we after this graduation this year, I'll probably be looking for a way to, like we'd mentioned, return to Bharat, and I'm looking for a way to be able to work there and stay there for a bit longer term. So we'll see. Everything is in the works. Great. बाकी जैसे आपने कहा अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है और भारतीय जो आप विद्याओं को भी यहाँ सीखने के लिए कोयम्बटूर आएंगे, तो क्या आपका जो रेगुलर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन और दूसरे सब्जेक्ट्स पे, और जो इंडियन एजुकेशन है जो शायद आपके धर्म अध्यात्म से संबंधित है, तो भविष्य में आप दोनों में से दोनों को किस तरीके से पैरेलली चलाएंगे या अपना फ्यूचर किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं? क्या सोच है आपकी कि भविष्य किस तरफ लेके जा रहा है आपको, या आप क्या प्लान करके बैठे हैं कि आगे क्या करेंगे? So the career related prospects that I was looking at was kind of based around being a foreign service officer, so doing embassy work, possibly through the US government, but staying abroad, and so they sort of assign you different places and things. For that, they the angle that I would hope to approach that with is so they would be looking for diplomatic skills and abilities to sort of bridge cultures. Language becomes a big focus. So isi wajah se, that's not really the reason though why I pursue the language and the dharma, and that, like, that's my own personal passion, something that I feel is incredibly fulfilling, and even if it's difficult to explain, I feel like I almost don't have a choice, especially with the language things that like kuch mujhe koi na koi mujhe kheech rahe hai to into everything that I'm interested in, but so my hope is to be able to marry the passion and the practical and be able to have both of those things work together. So that's just one avenue that I had in mind. But ultimately, what I hope for the future is to help spread the teachings that have helped me, help increase awareness. So there's so much that's going on right now, Jesse. So there's been a part of Sanatani practices that have become popular in the West, but it's a very narrow part of them. So you have Hatha Yoga and things of that nature that are becoming very, very popular and very in vogue, but it's only sort of barely scratched the surface. And not only that, but there's portions of it that have been taken and sort of recontextualized and redefined a little bit, and they're sort of trying to cover up the roots of it and cover up, try and like because they want to make it secular and not have it be connected to anything deeper, but you can't really do that. It's very difficult to do that with nor should one do that
with things like yoga and whatnot. So I feel like there's a lot of opportunity if there's more knowledge and understanding of the roots and where these practices are coming from and how much deeper they go than just like physical postures and things like that, that people will get even more benefit out of it, and the tradition can also carry on as it has. And in addition, Jesse, though, you are Jyotishi, and that's also a subject that I'm very passionate about. And Vedic Jyotish has very much caught on in the West, and particularly through mediums like YouTube and whatnot. People are beginning to become aware of it. And there's a great deal of interest in that, in Ayurveda, and anyone who studies any one of these branches starts to see that they're all connected. There isn't a single branch that, it's very difficult to say, I will only do this and not get into the rest of it. Like Jyotish is connected to Ayurveda, which is connected to, the yoga, which is connected to the entire set of teachings that the rishis have passed down through parampara, and people are starting to realize that there's a lot, it goes a lot deeper too. बिल्कुल। मेरी मुलाकात हुई थी डेविड साले जी से, जिनका भारतीय नाम पंडित वामदेव शास्त्री है। उन्होंने भी आयुर्वेद, योगा और ज्योतिष इनको रिलेट करके और हिंदुइज्म को रिलेट करके कई बुक्स भी लिखी उन्होंने, और शायद अमेरिका में उनका सेंटर भी है, एजुकेशन सेंटर। तो बहुत अच्छा लगा। एक चीज जो बहुत ही अलग प्रश्न कर रहा हूँ, केशव अपना जीवन साथी भारतीय चुनेगा या अमेरिकन चुनेगा? मुझे लग रहा है कि भारतीय होंगी। अब तक मुलाकात नहीं हुई, पर मुझे आशा है कि that can happen। तो देखते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपके मंगल जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपसे मिलके हर बार ताजगी मिलती है, अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं भारत की जो रूट्स है वो ऐसा लगता है कि उसका एक पौधा अमेरिका में भी लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे इस रहस्य धारा चैनल के आप निरंतर सदस्य रहेंगे। हम दोबारा आपके पास आएंगे, कभी आपसे चाहेंगे कि थोड़ा समय बाद कि इसी चैनल पे आप एक पूरी गणपति पूजा हमारे लिए संपन्न करें। Sure, anytime जी, I would love to do that. That sounds great. अपने आप में हमारे लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि जब केशव कैन डू तो हम क्यों नहीं। Will do. ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। पर जाने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ और अपने बारे में या अपनी सोच के बारे में या अपने विचारों के बारे में कोई भी अच्छा सजेशन कोरोना काल में देश के लिए, विदेश के लिए, भारत अमेरिका को लेकर किसी भी संदर्भ में अगर आप सबको अपनी तरफ से इस रहस्य धारा के मीडियम से कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कुछ अपना लास्ट संदेश हमें दीजिए। So with recent, so I've been involved in just daily sandhya, daily Durga Japa, things of this nature, and that would just be for that aspect. Just one of my only suggestions is just that, in addition to the laukik, vyavaharika considerations of the masks and the vaccinations and things like that, to just keep on top of the things that keep you spiritually healthy as well, and that psychologically sound, spiritually healthy, and those sadhanas have been helping me quite a bit. And I think that would be my only recommendation. थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला केशव। Thank you, बिल्कुल, धन्यवाद जी।